एक लड़की थी जिसको एक रिस्ट्रिक्ट वो बोलते हैं ना, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए वो वहाँ पे जा रही थी। तो मैंने उसको बोला, એટલે મેં ગુજરાતીમાં કહું, મેં કીધું કે આ સાઈડ તમારે ના જવાય, આ રીતે અહીંના રૂલ્સ છે જેવો બી હોય, તો એને ખબર ના પડી। તો હું શું કીધું हिंदी लगे हाँ। પછી मैं इन्हें हिंदी में समझायूँ कि ऐसे तुम्हें नहीं जा सकते क्योंकि वो वहाँ का रूल्स है, ऐसा है वो भी है, जो रीज़न था मैंने उसको बताया। फिर मैंने उसको बताया, वो समझ गई लड़की, कोई बात नहीं। मैंने उसको बताया अब ओके आप जा सकते हो। फिर क्या हुआ कि आगे गया, मैंने सोचा सॉरी હું આગળ ગયો, વિચાર્યું કે જો આ કદાચ હિન્દી ભાષી ના હોત ને ફોરેનર હોત, ઇંગ્લિશમાં બોલતી હોત, તો કદાચ હું એને ઇંગ્લિશમાં સમજાવત। ચલો ટ્રાય કરોત હું કે यहाँ કદાચ જે બી મારી તૂટી ફૂટી લેંગ્વેજમાં ટ્રાય કરો તો એને સમજાવવાનું કે આ રિસ્ટ્રિક્શન એરિયા છે, ત્યાં ના જવાય। તો ભાઈ ગુજરાતી એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ, ભાઈ નથી આવડતું કંઈ વાંધો નહીં, અમે શીખવાડીશું, અમે તને સપોર્ટ કરીશું। જે લોકો આ લફડામાં પડે છે ને લેંગ્વેજના, ભાઈ એ લોકો કોઈ દિવસ આગળ ના આવે। તમે જુઓ દેખાય જ છે વસ્તુ, જે લોકો ખાલી લેંગ્વેજ માટે બાજે છે તો પછી એ લોકો બીજામાં શું ભળવાના? તમે વિચારો, અમે ગુજરાતમાં રહીએ, ગુજરાતમાં ઘણા બધા અલગ લેંગ્વેજવાળા આવે છે, અમે સામેથી બોલીએ હિન્દી, ભાઈ हमको आता है तुमको नहीं फावता कोई बात नहीं, નહીં બધા બોલે છે સામેથી। એવું નહીં કીધું ભાઈ નહીં તારે ગુજરાતી શીખવી પડશે। અમે ગુજરાતી બોલીએ ને સામેવાળાને પણ સમજીએ છીએ। ચલો કોઈ આવી જાય ને વ્યક્તિ આમ છે ને તેમ છે કરે, તો હું એને મારી લેંગ્વેજમાં જ સમજાવું, ભાઈ ઓમ સન તેમ સ મેહોણી લેંગ્વેજમાં। એવું નહીં કે ભાઈ એ રીતે ત્રણેય જઈએ। તમે વિદેશમાં જો કેમ ગુજરાતીઓ વધારે છે જાય છે અને એમની સાથે લોકોને સારું બને, કારણ કે જાય છે ત્યાં મેક્સિકન લેંગ્વેજ શીખે, સ્પેનિશ શીખે, ઇંગ્લિશ શીખે, રશિયન લેંગ્વેજ શીખે, જાપાનીઝ શીખે। મારે એક ભાઈબંધ જે આ જાપાનીઝ કંપનીમાં જોબ કરે, લે એ ભાઈ જાપાનીઝ લેંગ્વેજ શીખે છે બધા। એવું તો કીધું નહીં કે ભાઈ તું અમારા ગુજરાતમાં તારી જાપાનીઝ કંપनी तू गुजराती सीख, कभी नहीं बोला भाई उसको, समझ रहे हो ना। इसीलिए गुजराती लोग आगे, और तुम भाई टिके हो नहीं, भाई हमारी लैंग्वेज तुम सीखो, हमारे एरिया में हो तो तुम वही बोलो, भाई कभी आगे नहीं आ पाओगे तुम, समझो। क्या बोलूँ, कुछ बोलने को है ही नहीं। इसी वजह से भाई हम पीछे हैं, इसी लफड़ों में पड़े हुए हैं भाई। मेरे को भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं भी समझता हूँ मराठी, नो डाउट, लेकिन नहीं, मैं भी जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे वो लोग हिंदी बोलते हैं, उनको गुजराती में दिक्कत होती है वो लिखने में। तो हमने वो कभी नहीं बोला कि नहीं भाई चलो तुम गुजरात में रहो, हमने उनको सपोर्ट किया, भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूँ गुजराती हूँ, मेरे को लिखना आता है, मैं लिख के तेरे को दूंगा। वो गुजराती डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते भाई, तो हम सपोर्ट करते, कभी नहीं बोला भाई। इसीलिए लोग गुजरात में आते हैं भाई, दूर दूर से, भाई नहीं चलो गुजरात अच्छा है। क्यों दूसरी कंपनियां गुजरात में आती है? सबको पता है लैंग्वेज इशू या नहीं है, उस बंदे को नहीं आता तो वो उसी लैंग्वेज में बात करेगा। अगर कोई चाइनीज़ आता तो मैं चाइनीज़ बोल के उसको बात करूँगा, मैं ट्राई करता हूँ, नो डाउट करते हैं भाई। ऐसा नहीं कि नहीं तू हमारी लैंग्वेज सीखो, तो भाई ऐसे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे तुम। और गुजराती आगे बढ़े इसी रीजन से, हड़ी मड़ी न रहा है बता साथ है कोई पण। अगर मेरे को चांद पे जाना हुआ ना भाई, तो मैं चांद की भी लैंग्वेज सीखूंगा, मून लैंग्वेज। मार्स पे जाना हो तो मार्सियन लैंग्वेज में मैं सीखूंगा। अगर मेरे थैनोस के पास जाना पड़ा वो टाइटन पे, तो मैं टाइटन की भी लैंग्वेज सीखूंगा भाई। सबके साथ जुड़ मिल के मेरे को जो रहना है, ऐसा नहीं कि अपने ही પોતાનું એક જ હાચો ભાઈ, એકડી હાચી, और कुछ नहीं कहना भाई। समझ जाओ जितना जल्दी हो सके उतना।